অসম মিজোৰাম সংঘাতৰ আঁৰত বিদেশী শক্তি জলাজুইত ঘিউ ঢালিছে কংগ্ৰেছে বিনষ্ট কৰিব খোজা হৈছে উত্তৰ পূবৰ সাতাম পুৰুষীয়া ঐক্য সংহতি এই অভিযোগ অৰুণাচলৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ बाहर के तथ्य आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग भी तहकीकत कर सकते हैं। हम लोगों के पास सरकारी हम लोग का अपने एक व्यवस्था से भी पता चल गया कि बाहर से बहुत से तथ्य हैं जो इस वायलेंस को ये मिजोरम और असम को जो बाउंड्री इशू को लेकर के भड़काने का काम कर रहे हैं। दरअसलते सोमवारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल किरेण रिजिजुर नेतृत्वत उत्तर पूर्वांचলৰ বিজেপি সাংসদসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰি অঞ্চলটোৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে অৱগত কৰে য'ত সন্নিবিষ্ট আছিল অসম মিজোৰাম সংঘাতৰ প্ৰসংগ বিজেপি সাংসদসকলৰ স্পষ্ট অভিযোগ সীমাৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ বিষয় এটাক লৈ কংগ্ৰেছে ৰাজনীতি কৰিছে কংগ্ৰেছক এনে ঘৃণনীয় ৰাজনীতি নকৰিবলৈ আহ্বান জনালে কিৰেণ ৰিজিজু ये जो सामने में आया इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस और कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश में अशांति फैलाने का कोशिश कर रहे हैं उसको हम खंडन करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम नॉर्थ ईस्ट का विकास के लिए जो काम कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इफाले प्रधानमंत्री साक्षाৎ करी कांग्रेसर विरुद्धे सुच्चार मंगलदৈৰ सांसद तथा बीजेपी राष्ट्रीय साधारण संपादक दिलीप शइकिया कांग्रेस का जो उनका इविल डिजाइन है इविल एजेंडा है उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं स्ट्रांगली कंडेम करता है। हाल ही में उन्होंने फेसबुक में और ट्विटर में उन्होंने जो भी लिखा कि नेशनल बाउंड्रीज खतरे में है इंटरनेशनल बाउंड्री खतरे में है और इंटरस्टेट बाउंड्री खतरे में है ये खतरे का घंटी बजाने वाला कोई नहीं है ये कांग्रेस का उनका शासन ही है। यार विपरीते অসম মিজোৰাম সীমা বিবাদে গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ বাবে বিজেপিক পোনপটীয়াকৈ জগৰীয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহক ব্যৰ্থ আখ্যা কংগ্ৰেছৰ I think this entire situation has been totally mishandled by the central government, by the Union Home Minister, and I think it is appropriate that the Home Minister convenes a meeting where the two chief ministers are present because we don't want to see this kind of ugliness in the future. আনহাতে মিজোৰামৰে সংঘাতৰ ক্ষেত্ৰত অসমে অন্য ৰাজ্যৰ সহানুভূতি আদায়ত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিষয়টোত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ অসম মিজোৰামৰ ঘটনাটোৱে অসম মিজোৰামৰ সংঘাতৰ ঘটনাটোৱে অসমক সাংঘাতিক লোকচান কৰিলে অসমৰ ইছ্যু ডাইভাৰ্ট হৈ গুচি গ'ল অসমীয়া মানুহৰ আশা আকাংক্ষা বহু পৰিমাণে লোকচান হ'ল অসমৰ মাটি গ'ল মুঠতে চাৰিওফালে লোকচান উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে উপগ্ৰহীয় আলোকচিত্ৰৰ সহায় লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল নতুন দিল্লীয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা